Hello dear students, welcome to your channel Online Tuitions with Nikhil Goyal. So let's start our topic Heron's formula for class 9 exercise 12.1 NCERT. Question number 1. The question number 1 is a traffic signal board indicating school ahead is an equilateral triangle. एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड जो इक्विलेटरल ट्रायंगल की शेप का है उसके ऊपर स्कूल अहेड लिखा हुआ है विद साइड ए जिसकी साइड की लेंथ ए है. फाइंड द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोन्स फार्मूला. हीरोन्स फार्मूला को यूज करते हुए उस सिग्नल बोर्ड की एरिया को फाइंड कीजिए. इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर, अगर उसका पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर है, देन व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द बोर्ड, तो उसके बाद उसका एरिया क्या होगा. सो देयर आर टू कंडीशंस. फर्स्ट कंडीशन इज साइड ए एंड फाइंड द एरिया यूजिंग हीरोन्स फार्मूला. सेकंड कंडीशन इज इफ perimeter is 180, then what will be the area. This is the second condition. So first, using first condition, let's find the area using Heron's formula. We have given its side A, side of board A, and side of board is A, then it is an equilateral triangle. For an equilateral triangle, all sides are equal, so A equal to B equal to C, because all sides are equal. All sides of an equilateral triangle are equal, so A is equal to B is equal to C. Then what we come to know, S will be semi perimeter, or you can completely write semi perimeter is equal to S. S is A plus B plus C by 2, but A, B and C, A, B और C ये तीनों इक्वल हैं, तो A, B और C की जगह हम A सब्स्टिट्यूट कर देंगे, बिकॉज B and C बोथ आर इक्वल टू A, तो B और C की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए A. Then what is our semi perimeter? That is 3A by 2. This is the semi perimeter. Then using Heron's formula, area of board, area of traffic signal board or area of triangle will be square root S into S minus A into S minus B into S minus C. Here again A, B and C are equal, so we will put B and C as A. Then S is equal to 3A by 2 into 3A by 2 minus A into 3A by 2 minus B की वैल्यू A into 3A by 2 minus A, putting C is equal to A. Now solving 3A by 2, here you can take LCM and then subtracting you will get 3A by 2 minus A. LCM लेंगे और सॉल्व करेंगे, आपको इसका आंसर मिलेगा A by 2. सेम पार्ट आर दिस A by 2 and A by 2. So अब यहाँ से हमें इनके फैक्टर्स पता चल गए हैं. A इंटू ए इंटू ए इंटू ए, 4 टाइम्स ए है तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा A इंटू ए. 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम्स है तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 2 इंटू 2. 3 का कोई पेयर नहीं बन रहा है, 3 सिंगल टाइम है, तो ये रूट के अंदर एज इट इज रहेगा √3. सो इनको मल्टीप्लाई करने पर कितना बनेगा, A स्क्वायर √3 बाय 4. सो A स्क्वायर √3 by 4 or √3 A square by 4. This is the area of equilateral triangle shaped board, or we can simply say this is the area of an equilateral triangle. Formula for equilateral triangle. Now we are given that the perimeter of board is 180 centimeter. So if perimeter is equal to 180 centimeter, what is the perimeter? Sum of all sides, but B and C are equal to A,
So A plus A plus A and 3A is equal to 180. Otherwise, we know that perimeter of equilateral triangle is 3A. So we can directly write 3A is equal to 180. Then we will find the value of A. 180 by 3 is equal to 60 centimeter. 60 centimeter the side A. Then we will directly put the side A in the area we have already calculated in part 1. So area of board will be equal to root 3 A square by 4. Putting the value of A, root 3 into 60 square by 4, root 3 into square of 60, 3600 by 4. Then we will cancel 3600 by 4. It will be cancelled at 900 and your answer will be 900 square root 3 centimeter square. So this is your question number 1 for NCERT exercise 12.1 Heron's formula. We will proceed our question number 2 in our next video. Till then, watch this video, like and subscribe my channel. Thank you and have a nice day. Take care.